Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Ram
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar, Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Jaya Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishna. Shrimati Gopal Krishna Goswami Swami. Prabhupada Shasai Swami Goswami Goswami. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Desatarine Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Dati Swaparantikam Vande Shri Guru Shri Juta Padakamana Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakambitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kancha Kanta Namostute Taptaka Rangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Let me read something about chanting.
अब हम जब के विषय में कुछ पढ़ेंगे। Prabhupada says in a lecture on the Srimad Bhagavatam in Vrindavan, first canto, chapter 7, text 6. This was September 10, 1976. प्रभुपाद जी 10 सितंबर 1976 वृंदावन में एक प्रवचन दे रहे हैं भागवत प्रथम स्कंद 7वें अध्याय 6वां श्लोक। To chant Hare Krishna, there is no need of qualification. Only have to be determined. I will chant. That's all. हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने में किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक दृढ़ता होनी चाहिए कि मैं जप करूंगा। Chanting of the holy name of the Lord is the prime benediction for humanity at large. Lecture in Gorakhpur, February 13th, 1971. 13 फरवरी 1971 में गोरखपुर में प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है ये मानवता के लिए बहुत बड़ा वरदान है। Then chanting is the Yuga Dharma. In this age, there is no other way, no other way, no other way than the chanting of the holy name of the Lord. Lecture on Chaitanya Charitamrita in San Francisco. तो सैन फ्रांसिस्को में चैतन्य चरितामृत के प्रवचन में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र यही युग धर्म है और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। And one more, Los Angeles, lecture on Bhagavad Gita. Srila Prabhupada says, chanting Hare Krishna is so easy that anyone can take part without any previous qualification. तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में भगवद गीता में प्रवचन में कह रहे हैं कि हरिनाम जप इतना आसान है कि इसमें कोई भी भाग ले सकता है, इसमें किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं। So yes, Prabhupada says, chanting is easy. You don't need any qualification. Our only qualification is that we have to be attentive and doing it according to Acharya's way, how to do it. तो हरिनाम जप बहुत आसान है, इसमें किसी प्रकार की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, बस यही एक योग्यता चाहिए कि ध्यान पूर्वक जप करना है और जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों ने हमको बोला है उस प्रकार से। Especially in Kirtan, we have to do it sincerely and with purity. विशेष रूप से कीर्तन जब हम कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से और शुद्धता से करना है। We are not professional musicians. हम कोई पेशेवर संगीतकार नहीं हैं। Prabhupada says in a letter to Tamal Krishna Goswami, he says, but do not change our principles. प्रभुपाद जी तमाल कृष्ण महाराज को लिख रहे हैं, पर उसमें बोल रहे हैं कि अपने सिद्धांत को कभी नहीं बदलना चाहिए। Practicing is already done by Kirtan. जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो अपने आप अभ्यास हो रहा है। It is not required for us to become artists. उनको कोई संगीतज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। Yes, like in Kirtan, of course, I don't know, I never ever remembered that I was doing any practice before the Kirtan. The Kirtan itself is the practice. तो कीर्तन में किसी प्रकार की अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है, कीर्तन अपने आप में एक अभ्यास होता है। See, the professional musicians, they will practice before the main show. But for us, I don't think we have to do any practicing, isn't it? तो पेशेवर संगीतकार पहले अपना प्रस्तुत करने से पहले कुछ समय अभ्यास करते हैं, लेकिन हमको इस प्रकार के अभ्यास की कोई आवश्यकता नहीं है। Or maybe by playing instruments, yes, you have to learn how to play kartals. We're a Sankirtan movement, so that means that all of us should learn at least how to play kartals. तो जहाँ तक की वाद्य यंत्रों की बात है, कम से कम हम सभी को करताल तो सीखना ही चाहिए। हम एक संकीर्तन आंदोलन है। Or midanga kol. तो हम मृदंग भी सीखना चाहिए। If there is a kirtan and no one is picking up the kartals because no one knows how to play
the kartals, then we are not Sankirtan movement. तो यदि संकीर्तन हो रहा है और कोई भी करताल उठाने से डर रहा है क्योंकि किसी को बजाना ही नहीं आता है, तो फिर हम एक संकीर्तन आंदोलन नहीं रह जाएंगे। But I'm sure some of us are more musically inclined than others, so it is easier for them to play kartals. Prabhupada showed us very simple: 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो हम लोग में से कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनके रगों में संगीत दौड़ रहा है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है करताल सीखना। प्रभुपाद जी तो बताए 1 2 3 1 2 3 करके बजाना। Now we're going to read about musical instruments. आज हम वाद्य यंत्रों के विषय में पढ़ेंगे, Because this is very important that musical instruments, those who play musical instruments, they should be good. I mean, not really expert, but at least ching 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 ching. ये बहुत आवश्यक है कि कम से कम जो कीर्तन कर रहे हैं उनको आसान वाद्य बजाने आना चाहिए। Or then when you become familiar, right? I remember when the Bangladesh party, Sankirtan party, but he left his body now. Krishna Kirtan Prabhu, world famous Kirtaniya from Bangladesh, from Dhaka. They came to America. They played to all the, like one summer they did to all the Festival of India, Ratha Yatras, different temples. So they came to Toronto. And no one showed me how to play kartals somehow or other, because I think Filipinos, they're very inclined in music. So I played kartals for them. And then by the end of the kirtan, he asked me, why don't you travel with us? तो कृष्ण संकीर्तन प्रभु जो की संकीर्तनिया थे बहुत श्रेष्ठ बांग्लादेश ढाका से, तो एक बार वो अमेरिका आए थे टोरंटो में, और उन जो कीर्तन कर रहे थे तो महाराज जी उस समय करताल बजाए। तो पहले तो कभी उन्होंने अभ्यास नहीं किया था, लेकिन उसके अंत में कीर्तन के अंत में उन्होंने बोला महाराज से कि आप हमारे साथी क्यों नहीं चलते हैं। Prabhupada says, letter to Jagadish Pandit, 28th of December, 1974. My opinion is that it is not necessary for us to utilize these different musical talents for spreading Krishna consciousness. तो 18 दिसंबर 1974 में जगदीश पंडित प्रभु प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अलग-अलग हमारा अभ्यास है वाद्य यंत्रों का, उसको संकीर्तन के लिए प्रयोग करना चाहिए। I would rather see people follow strictly the path of Lord Chaitanya and his Sankirtan devotees. मैं यही चाहता हूँ कि भक्त लोग अच्छी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुगामियों का अनुगमन करें। We are using mridanga, kartal, that is enough. हम मृदंग और करताल का प्रयोग कर रहे हैं, यह पर्याप्त है। We are not musicians. हम कोई संगीतज्ञ नहीं हैं। We are Krishna bhaktas. हम कृष्ण भक्त हैं। Therefore, we do not stress so much importance on these different musical talents. अतः अलग-अलग वाद्य यंत्रों का ज्ञान बहुत आवश्यक नहीं है, जिसपे हमारा This is not a criticism, but we observed also previously, a few years ago, there are some kirtans whereby it's accompanied by saxophone, saxophone. Okay, violin is good, it's a string instrument. Lord Chaitanya Mahaprabhu's time, there is no such thing as saxophone or trumpet. Maybe flute is being used. It's like the other day, Damodarasta compares as a flute. That is traditional instrument. Or sarangi, esraj or veena, that is fine. But usually there is not required. तो मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ साल पहले कीर्तन हो रहा था
उसमें कोई भक्त सैक्सोफोन लेके आ गए और बजा रहे थे, ये इतना अच्छा नहीं है। कुछ कुछ चीजें ठीक है, जैसे वीणा हुआ या तो बांसुरी हुई या तो वायलिन भी चल जाएगा, लेकिन ये सब बहुत आवश्यक नहीं है। So nowadays, in some kirtans, they use guitar, electric guitar, or electric bass. तो आजकल जो है संकीर्तन में विद्युत चालित गिटार अथवा बेस, हैवी बेस का प्रयोग करते हैं। Because the problem here is that our attention is more diverted into the musical instruments that's being played instead of the Mahamantra. इसमें दिक्कत ये होती है कि हरिनाम की जगह हमारा ध्यान अलग-अलग वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हो जाता है। Yeah, we don't need to amplify too much of the instruments. As long as we can hear more, just enough, then that is good enough. वाद्य यंत्रों की आवाज को बहुत अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा सुन लिया जाए वही पर्याप्त है। Srila Prabhupada says, Sri Chaitanya Mahaprabhu is God himself. Had he thought it would have been better to spread Krishna consciousness by another way, he would have done so. But no, simply with mridanga and kartal. तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, वे चाहते तो संकीर्तन को किसी और माध्यम के द्वारा प्रस्तुत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल मृदंग और करताल का ही प्रयोग किया। There is no need for us to try and add anything. अब हमको इसमें और कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। To this simple method, it will only be a distraction. ये केवल ध्यान भटकाने वाला काम हो जाएगा। Now, this is in the temple room, temple programs. Regarding instruments for temple kirtans, kartal and midanga are sufficient. There is no need of other instruments. मंदिरों में हम कीर्तन कर रहे हैं, उसमें करताल और मृदंग पर्याप्त हैं, और किसी वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं है। That was a letter to Rupanuga Prabhu. ये रूपानुगा प्रभु को एक पत्र लिखा गया है। So, Srila Prabhupada only wanted these instruments to be played in temple artics, mridanga and kartals. During Lord Chaitanya Mahaprabhu's time, especially in Rath Yatra, one party, there were 4 parties. Sankirtan parties. One party was composed of 21 men, 4 people playing mridangas, 1 leading the chanting, and 16 others striking kartals. कुल मिला के एक जत्थे में 21 लोग थे, उसमें एक तो कीर्तन की अगुवाई करते थे और 4 लोग मृदंग बजाते थे और बाकी 16 लोग संकीर्तन करते थे। But they're all playing, they're synchronized, they're all playing together. Not that one mridanga player is playing in different beat and then the other one. No, it should be in unison. तो सभी एक साथ नए गति ताल में एक साथ जो है कीर्तन करते थे, ऐसा नहीं कि मृदंग कहीं और जा रहा है, करताल दूसरा बज रही है। Have you heard how Prabhupada played the mridanga in his recordings? आपने कभी प्रभुपाद जी को मृदंग बजाते हुए देखा है रिकॉर्डिंग में? It's very simple, isn't it? Nowadays, again, if the kirtan is going on and the mridanga player just trying to innovate more intricate beats and then he's not chanting, that is not proper. प्रभुपाद जी जब भी मृदंग बजाते थे तो बहुत आसान बजाते थे। आजकल कई बार देखा जाता है कि मृदंग बजाने वाले बहुत विशेष प्रकार बजाने का प्रयास करते हैं और उसमें वे स्वयं कीर्तन नहीं करते हैं। Prabhupada says, now here the Bhakti Yoga system is that you stick to the hearing of Hare Krishna and the music, melodious music of Khol and Kartal. Then naturally you will become detestful for hearing other songs. तो ये संकीर्तन जो आंदोलन है, इसमें यही है कि हम अच्छे राग में हरे कृष्ण महामंत्र बोलें, श्रवण करें
और उसके साथ साथ करताल और मृदंग की ध्वनि को भी सुने, इससे जो है हम कृष्ण भाव में भावित हो जाएंगे। That was in Montreal, August 24th, 1968. मॉन्ट्रियल में प्रभुपाद जी 1968 में। Have you seen the video of the early days when there was Kirtan? Srila Prabhupada was there, and one devotee was playing the harmonium. He just like a drone. He didn't play really the harmonium properly. And Prabhupada accepted just to encourage them. One time also, 22nd Avenue, one newcomer, he brought a piano. So Prabhupada accepted it. But then as we become mature, there's no need of all of these things. तो एक बार की बात है, पाश्चात्य देश में प्रभुपाद जी के सामने कोई कीर्तन कर रहा था, तो हारमोनियम लेके आया और ठीक से बजा नहीं रहा था, लेकिन प्रभुपाद जी उसको उत्साहित करने के लिए उसको स्वीकार कर लिया। और एक बार की बात है कि कोई पियानो लेकर आ गया और उसमें बजाने लगा, तो उसको भी प्रभुपाद ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में ये सब चीजें बहुत नहीं स्वीकार की। Says here, Kula Pavan Das commented 2007 in dandabats.com. If the lead singer introduces a complicated melody, the rest of the group can't follow, and as a result, the congregational singing is weak. 2007 में dandabats.com में एक आर्टिकल छपा था, उसमें बताया गया कि यदि कीर्तन की अगुवा करने वाला बहुत कठिन धुन चुनता है, तो बाकी के लोग तो उसका अनुसरण ही नहीं कर पाएंगे, तो जो कीर्तन है वो कमजोर पड़ जाएगा। Such kirtan is deficient. ऐसा जो कीर्तन है वो पर्याप्त नहीं है। So we should chant, kirtan leader should sing in such a way that is not so complicated that the rest of the devotees who's going to respond, it'll be very difficult for them to respond properly. तो कीर्तन का जो अगुवा करने वाला उसको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धुन जो गा रहा है इतना कठिन नहीं होना चाहिए कि बाकी के भक्त पीछे से उसको बोल भी ना पाए। If the mridanga is just too much and it's just making too much noise, no, that's not proper. यदि मृदंग से बहुत जोर की आवाज आ रही है तो ये भी ठीक है। And also, one devotee told me, we should treat the mridanga just like a baby. You don't carry mridanga and just be swaying, and it's very difficult. They have to be really taken care of properly. Says here, Bhakti Vikas Swami and Kirtan. Bengali Vaisnavas venerate their instruments as part of the Lord's paraphernalia. Yes. Their personalities, we should not put, it's like we don't put Bhagavad Gita on the floor, so we should not put kartals on the floor. ये जो वाद्य यंत्र है ये भी व्यक्ति है, जिस प्रकार हम भगवद गीता को जमीन पर नहीं रखते हैं, उसी प्रकार करताल को जमीन पर नहीं रखना चाहिए। Mridanga should have always a cover. मृदंग के ऊपर कोई कवर होना चाहिए, खोल होना चाहिए। Few days ago, I noticed that the 24-hour Kirtan department here also, they just put their instruments like scattered everywhere in the floor. So I told them you should get like some kind of a container and put all the instruments there, the wampers, the kartals, the shakers, all in one place. तो कुछ दिन पहले मैंने देखा 24 आवर डिपार्टमेंट वाले भक्त अपने वाद्य यंत्रों को इधर-उधर बिखरा कर रख देते थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप एक डिब्बा ले आइए और उसमें जो भी है करताल, डंका, शेकर सब उसी में रख दीजिए। And it took them some time to buy a container. Now you'll see, if you notice, it's contained in a red kind of like basin. तो उनको कुछ समय लगा, लेकिन अभी आप देखेंगे तो उनके पास लाल रंग का एक डब्बा है जिसमें वो सब कुछ रख देते हैं। Prabhupada says, yes, we should
have good quality mirangas and that they should always be covered for protection. प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारे पास अच्छी गुणवत्ता वाले मृदंग होने चाहिए और उनके ऊपर कोई खोल नहीं होना चाहिए। Especially here in India, we have the mirangas Balaram. Actually, this is Balaram. तो भारत में विशेष रूप से जहाँ पर मिट्टी के मृदंग होते हैं, ये मृदंग और कुछ नहीं बलराम जी का ही विस्तार है। And in the West, it's made of fiberglass. तो पाश्चात्य देशों में जो मृदंग होते हैं वो फाइबर ग्लास के बने होते हैं। But that doesn't mean we should not take care of them also. It's the same care that we should do like what we have for the clay midangas. उनका भी उसी प्रकार से ध्यान रखना चाहिए जैसे मिट्टी के मृदंग का ध्यान रखते हैं। Kartals should be shining and have clean multicolored ribbons strung to them. And the midanga should be covered with attractive colored cloths. करताल एकदम चमकने चाहिए और उसमें विभिन्न रंग के फुंदे होने चाहिए और जो रंग होना चाहिए उसमें चारों तरफ कवर होना चाहिए। Big kartals are more suitable for outdoor kirtan than for inside, where the sound reverberates and amplifies. बाहर में कीर्तन करने के लिए बड़े करताल अच्छे हैं, लेकिन अंदर में कीर्तन करने के लिए छोटे करताल ही ठीक है, नहीं तो बड़े करताल से आवाज गूंजने लगती है और बहुत ज्यादा करके आती है। And we should know how to use it. Like in the beginning, it should not be like clang, 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 immediately loud. It should be like soft and very, very soothing to the ears in the beginning. And then when the kirtan start to increase, then we can increase also the sound. तो हमको उसको प्रयोग करना भी आना चाहिए। शुरुआत में करताल एकदम धीमे आवाज में बजाना चाहिए और जैसे जैसे कीर्तन आगे बढ़ता है तब आवाज थोड़ा तेज बजा सकते हैं। So we have to be able to know how to use the midanga or the kartals properly. तो ये हमको समझना चाहिए कि करताल और मृदंग को किस प्रकार से प्रयोग करना है। So sometimes also we may hear the blowing of conch shells and horns. That is very nice. कई बार जो है हम हो सकता है शंख ध्वनि अथवा बिगुल बाजा भी सुने, ये बहुत अच्छा है। Sometimes we hear that, right? They blew conch shells and also at the same time, I know Gopal, he has this big horn going like this, going like that. These are all bona fide instruments. ये शंख और श्रृंगी ये सब बहुत ही अधिकृत वाद्य हैं। Harmoniums should be only used during bhajans. हारमोनियम का प्रयोग केवल भजन में किया जाना चाहिए। Who knows how to play, of course. But it is not for kirtan and arti. कीर्तन और आरती में हारमोनियम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। So yes, Ayendra Prabhu, he somehow or other, he modified the harmonium, making it kind of like compact and small, that devotees also uses them in street harinam. नरेंद्र प्रभु ने हारमोनियम को और छोटा कर दिया जिससे कि उसको हम बाहर गलियों में हरिनाम करने में प्रयोग कर सकें। This is from Srila Bhakti Swami Maharaj. He says, in Vrindavan, devotees were singing kirtan during Artik with harmonium. भक्तिचार्य महाराज बोल रहे हैं कि वृंदावन में बात है कि भक्त लोग आरती कर रहे थे हारमोनियम के साथ। This did not please Srila Prabhupada. प्रभुपाद जी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। Prabhupada asked Bhakti Swami to go tell the devotee to stop singing with harmonium. प्रभुपाद जी ने भक्तिचार्य महाराज को भेजा और बोला कि उनको हारमोनियम। He approached him. He went to the temple and saw that it was Bharadwaj Prabhu singing. He approached him and told him that Srila Prabhupada did not want him to sing with harmonium. वो मंदिर में गया और उन्होंने देखा कि मंदिर में भरद्वाज प्रभु गा रहे थे, तो उनके पास गए और बोले कि प्रभुपाद जी हारमोनियम के साथ गाने के लिए मना कर रहे हैं। He then went back to Srila Prabhupada's quarters and Srila Prabhupada asked, who was the devotee singing? फिर महाराज जब वापस गए प्रभुपाद जी के घर में तो वहाँ पे प्रभुपाद जी से पूछे कौन से भक्त गा रहे थे। He replied, yes.
It was Bharadwaj Prabhu, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada replied, "Oh, it was Bharadwaj? He can sing with the harmonium." तो भक्तिजन महाराज प्रभुपाद जी को बोले कि वो भरद्वाज प्रभु थे। तो प्रभुपाद जी बोले कि अरे भरद्वाज थे, वो तो गा सकते हैं। So, but that is not applicable for everyone. लेकिन ये सबके लिए उपयुक्त नहीं है। So again, time, place, and circumstances that Srila Prabhupada will give specific instruction to specific devotees. तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार प्रभुपाद जी अलग-अलग भक्तों को अलग-अलग उपदेश दिया करते हैं। But this should not be the rule. लेकिन यह कोई नियम नहीं है। It's like there were two sannyasis here in Vrindavan. Prabhupada told one sannyasi, you should travel. तो जैसे कि वृंदावन में दो सन्यासी थे, प्रभुपाद जी ने इसे कहा कि आपको प्रचार के लिए घूमना चाहिए। This is the duty of the sannyasi, travel and preach. यह सन्यासी का कर्तव्य है कि घूमे और प्रचार करे। But then he told one of the sannyasis, says, you should stay. लेकिन उन्होंने दूसरे सन्यासी को बोला कि तुमको यहीं रुकना चाहिए। See, two different instructions. तो अलग-अलग के लिए अलग-अलग नियम। Regarding the instruments, string instruments are Vedic, but the real Vedic instrument is mridanga and kartal. Anyway, you have to do according to the time and circumstances. If you use these other instruments, you have got my approval and you can go on. They're to Bahudak. तो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हो सकता है प्रयोग हो जाए, लेकिन मुख्य है ताल और मृदंग। Yes. Srila Prabhupada not liking guitars. प्रभुपाद जी को गिटार बिल्कुल पसंद नहीं। This is from my glorious master. एक ग्रंथ है माय ग्लोरियस मास्टर, उससे Burijan Prabhu later comments that he feels that Prabhupada didn't really desire the use of guitars, but submitted because the idea was purposely presented to him. तो गुरुजन लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी को गिटार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया क्योंकि किसी कारण से उनके सामने प्रस्ताव रखा गया था। See, in some places in the world, there are things that they can do it there, but we should not do it here. तो विश्व के कुछ जगहों पर कुछ ऐसी चीज होती है जो कि वो लोग वहां पर भले कर रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर नहीं करना चाहिए। But see, in Hong Kong, they were able to encourage, have the public join the Kirtan because of the guitars. हांगकांग में वहां पर भक्त कीर्तन कर रहे थे, वो सबको उत्साहित करके कीर्तन में भाग लगवा सकते थे क्योंकि वो लोग गिटार का प्रयोग कर रहे थे। So Prabhupada, he kind of like submitted, okay, you can do it. But I don't think Prabhupada will want us to use guitars in India. तो वहां पर प्रभुपाद जी इसको स्वीकार करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रभुपाद जी हमको भारत में गिटार प्रयोग करने की अनुमति देंगे। How about the use of djembe? जैम्बे के विषय में आप लोग का क्या विचार है? Yes, they use this in South Africa because that is their culture. You know, this djembe came from there. तो साउथ अफ्रीका में वो लोग जैम्बे का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह उनकी सभ्यता है। It has a very powerful African beat. तो उसमें बहुत मजबूत देसी बीट है। It's like in other places. I've been traveling so many places all over the world. So some places their style of kirtan is not just like the way we do. Mostly, traditionally, we should sing as much as possible like the Bengali kind of way of kirtan. तो जो सामान्य रूप से हम कीर्तन करते हैं, जैसे बंगाली भक्त जब कीर्तन करते हैं, हमको प्रयास करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। लेकिन विश्व के कई एक जगह में जहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है कि वो हम लोग की तरह कीर्तन नहीं करते। So this is outside of the temple room, so it's like street kirtan. Have you ever observed the kirtan in Mayapur? Like outside, you know, those Westerners,
Yeah, आपने कभी मायापुर में बाहर जो पाश्चात्य देश के भक्त वहाँ पे कीर्तन करते हैं, क्या उसको देखा है? they have a different kind of beat and melody. So, time, place, and circumstance, again, it is acceptable. उनके धुन और ताल दोनों ही अलग होते हैं, देश काल परिस्थिति के अनुसार ये चीजें स्वीकार्य हैं। If that can help the people or the crowd to join and participate in the kirtan, just like locally in Africa or maybe in some places in South America or Latin America, then that is also all right. तो ये सब चीजें तब तक स्वीकार्य है जब तक और लोगों को, जनमानस को ये कीर्तन में भाग लेने के लिए उत्साहित करते हैं, जैसे कि अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वहाँ पे धुन और ताल अलग हो सकती है। So again, time, place, and circumstance, this may change, but generally, as much as possible, we should try to engage them traditionally, the way how we should do it. देश काल परिस्थिति के अनुसार इसे बदल सकता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जैसे हम लोग सामान्यतः कीर्तन करते हैं उसी प्रकार से करें। How about using accordion? According- You know what's accordion? Accordion is like from Germany. Actually, this harmonium came from Germany. You know, they go like this instead of pumping like this. So they have the instrument going like this. Very heavy. It's crossed here and goes like this. Mhm. ये accordion एक वाद्य यंत्र होता है जिसको आगे से फूंकने की जगह बगल से फूंकते हैं। So this is practical, especially walking Harinam, the use of accordion. In the West, they use this. तो ये वाद्य यंत्र जो है काफी स्वाभाविक लगता है, विशेष रूप से जब चल करके हरिनाम किया जाता है। I know Ramai Pandit Prabhu. Ramai Pandit, he used this with his group. And if you go maybe in the outside, immediate, near our temple, there's a group of devotees from Russia. They must be using this also. Oh, Jagat Guru also using this, but not in the temple room, not inside the temple. तो कई बार रशियन भक्त इसका प्रयोग करते हैं, मंदिर के बाहर आप जाएंगे तो वहाँ पर कुछ भक्त इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन मंदिर के अंदर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। Teachings of Lord Kapila. Prabhupada says, anyone can chant the Hare Krishna. तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिल में कपिल महाराज की शिक्षा में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कोई भी हरे कृष्ण का जप कर सकता है। There is no need for instruments, although Chaitanya Mahaprabhu introduced the mridanga and kartals. Otherwise, clapping in itself is sufficient. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसमें किसी प्रकार की वाद्य यंत्र की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु ने करताल और मृदंग प्रयोग किया, लेकिन हाथ से ताली बजाना यही पर्याप्त है। But there is a time when we heard many times devotees will chant Hare Krishna Mahamantra, clapping at the same time, but they will clap Hare Krishna, Hare Krishna. You know, there's a beat like, but then I've never heard that anymore also. You heard this before? Huh? कई बार जो है भक्त लोग हाथ से दो ताल बजा करके कीर्तन करते थे, जैसे महाराज ने कभी बताया, लेकिन उसके बाद सुना नहीं गया। So, but Prabhupada also showed us how to dance. Oh, it's not here, but I just remember now. The Swami step. It is in the old videos. The right foot to the left, then go back, and then the left foot to the right, and then swaying like this. Very attractive. तो प्रभुपाद जी ने वाद्य यंत्रों के साथ हमको कीर्तन में नृत्य करना भी सिखाया। स्वामी से प्रभुपाद जी ने बताया कि दाएं पैर को बाहिनी ओर ले जाना और बाएं पैर को भी बाहिनी ओर ले जाना। You never seen devotees holding hands, like this, and then they will go round and round like a tornado or something.
तो कृपा जी ने कभी दोनों हाथ बापू ने सिखाया कि दोनों हाथ पकड़ के टोर्नेडो पे घूमा जाए. No, 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 that's not good. That's not. Or you've seen devotees, I've seen gurukulis, I've seen brahmacharis also, they used to do this, but we don't allow this. They will all like lying down and their feet with each other like this, and then one will go around like something like this. You ever seen that? Yes, yes. Yeah, कई बार भक्त that's लोग not जो है चक्रगति जैसा बना लेते हैं जिसमें दो तीन भक्त नीचे लेट जाएंगे और पैर जोड़ करके बीच में एक भक्त उसको घूमेंगे एक पैर में. Prabhupada showed us when one is really like now feeling the ecstasy in chanting, he will go jumping down like this also, right? तो प्रभुपाद जी ने जब बोला कि जब ज्यादा आपको उत्साह आ रहा है तो आप ऊपर नीचे कूद भी सकते हैं. But sometimes you've seen even some of our senior devotees when they go in ecstasy, they will just like running something. Kirtan. You've seen that? देखते हैं कि कई बार जो है सीनियर भक्त जब उत्साह में आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि वो जॉगिंग कर रहे हैं. I guess they can do it, but we should not do it. It's not proper. But so that is for the instruments. Okay, now is the dance. Lecture in Baltimore, 1976, Srila Prabhupada, Chaitanya Charitamrita. So this benediction is offered by Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was very kindly come here, Nitai Gaur. So you take advantage of his mercy. प्रभुपाद जी बाल्टीमोर 1976 में प्रवचन कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत में, तो उसमें बोल रहे हैं कि यह जो संकीर्तन आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु ने हमको दिया कृपा करके, तो हम सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए. You are very fortunate that Nitai Gaur is here. If you simply chant Nitai Gaur and dance, then you'll become happy. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप सभी अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर निताय गौर हैं. यदि आप निताय गौर बोल करके नृत्य करते हैं तो आप सभी प्रसन्न रहेंगे. There is no difficulty. There is no difficulty. इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी. You are chanting Jai Sachinandana. This simple chanting, Jai Sachinanda, Hare Krishna. This chanting and dancing, Yajnari Sankirtana Prayar, Yajantihi Sumedasa. This is not I am manufacturing. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप लोग जय सच्चिदानंद बोल करके जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं. तो ये जो जप है ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये तो शास्त्र में लिखा हुआ है. यदि संकीर्तन प्राय ये जल्दी इसमें सब. Prabhupada gave instruction also that the deities of Gornitai, the garlands should not be tied together. तो प्रभुपाद जी ने गौर निताय के श्रृंगार के विषय में बताया था कि उनके जो माला है उनको आपस में जोड़ना नहीं चाहिए. Because if they're tied together, then how can they dance? क्योंकि यदि उनको बांध दिया जाए तो नृत्य कैसे करेंगे. We should actually picture in such a way that Gora Nitai, they are dancing in Kirtan. Sometimes they will put kartals. You've seen kartals? तो गौर निताय के जो विग्रह होते हैं उसमें इसी भाव का चित्रण करना चाहिए कि वे नृत्य कर रहे हैं. इसलिए कई बार पुजारी लोग हाथों में करताल पकड़ा लेते हैं. This is room conversation. July 10th, 1976 in New York. कक्ष चर्चा है जुलाई 10, 1976 न्यूयॉर्क. Oh, where is it? The devotees, the kirtan begins with the chanting of the Maha Mantra, slowly at first and melodiously. Later, the chant will speed up as the spirit of the devotion spreads. तो हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन हम करते हैं उसमें शुरुआत में मधुर ध्वनि में धीरे धीरे गान करते हैं. फिर जैसे जैसे गति बढ़ती है तो कीर्तन का भी ध्वनि बढ़ती जाती है. Often, the most rapid and intense chanting is done by a hardcore knot of devoted men before the curtains of the shrine. तो
तो सामान्यतः जब श्री विग्रह के कपाट खुलने वाले हैं उस समय जोर से कीर्तन किया जाता है। The devotees get in one group and start. Hardcore devotees. The rhythm approaches the unexpressed train of an express train. That means really fast. And the atmosphere is apt to remind a lay visitor of an old-fashioned football rally. तो जब ऑर्डर खुलने वाला होता है उस समय जो भक्त होते हैं वो इतना तेज गाते हैं जैसे कोई गाड़ी चल रही है। Some of the onlookers try to keep up with the central group, clapping their hands, swaying their bodies, throwing arms upwards, and among the younger, adopting modern dance steps to the rhythm. तो कई लोग जो आते हैं दर्शन करने के लिए वो प्रयास करते हैं कीर्तन के साथ हाथ में ताली बजाया जाए और कई लोग जो है जोर से नृत्य भी करने लगते हैं उसी धुन के साथ। Have you seen some videos? I've seen the videos. There was a kirtan, and one devotee, he was dancing like, you know, like a rapper, or like what do you call this dance? Like, yeah, it's like so many footsteps, like, you know, and then he will like go around, round and round. तो एक वीडियो था जिससे भक्त कई बार जो है पैरों पे पैतरा बदल रहे थे और फिर थोड़ी देर में जोर से घूम जाते थे। Prabhupada, he says, who has introduced this peculiar dancing? प्रभुपाद जी प्रश्न उठाते हैं कि ये विचित्र प्रकार का नाचने का तरीका किसने चालू किया? Then Harisori replied, it just evolved, then laughing. तो हरीश्वरी ने बोला कि ये अपने आप ही प्रकट हो गया है। Rupanuga, we were speaking about that the other day. It's changed from the original dancing that showed us to something else, too much like the modern dancing. तो बोल रहे हैं कि आपने हमको शुरुआत में नृत्य करना सिखाया था लेकिन अभी जैसे नृत्य हो रहा है ये तो बहुत ही परिवर्तित हो गया है जैसे आजकल के लोग नृत्य करते हैं। And Prabhupada says, I think this is not good. प्रभुपाद जी ने बोला ये ठीक नहीं है। Tamal Krishna, shall I read on? The service has become, what way should we dance, Srila Prabhupada? With our hands outstretched? Sometimes the devotees like to jump around. Is that all right? तो तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि नृत्य करने का ठीक तरीका क्या है? क्या हमको हाथ ऊपर करके नृत्य करना चाहिए या कूदने के विषय में पूछ रहे हैं? Prabhupada, in ecstasy one can do anything, that is another. But artificially, to do something is not good. प्रभुपाद जी बोलते हैं जब कोई कीर्तन में उन्नत हो जाता है तो कुछ भी ठीक है लेकिन कृत्रिम रूप से कुछ भी नहीं करना चाहिए। And Tamal Krishna says, but if one feels like jumping, it is all right. तो तमाल कृष्ण महाराज से पूछे अगर किसी की इच्छा हो रही कूदने की तो क्या ये ठीक है? Prabhupada, anything artificial is not required. प्रभुपाद जी बोलते हैं कृत्रिम रूप से कुछ भी किया जाए ठीक नहीं उसकी आवश्यकता नहीं। Then Rupanuga asked, so running back and forth is not? Then Prabhupada says, no, that should not be an artificial. तो रूपन पूछते हैं तो आगे पीछे दौड़ने के विषय में आप क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं यदि कृत्रिम रूप से किया जाता है तो अच्छा नहीं। So I've seen devotees going back and forth, running. You have seen? कई बार हम देखते हैं कि भक्त लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं, क्या आपने देखा है? If it is not artificial, if it's like really the height, then Prabhupada said it's okay. The main thing is that it should not be artificial. तो मुख्य चीज है कि कृत्रिम प्रकार से बनावटी नहीं होना चाहिए। Okay, dancing like peacocks. तो मयूर के समान नृत्य करना। If materialistic persons can find the association of a person engaged in the loving devotional service of the Lord, they become enlightened and dance just like peacocks. तो हाँ एकदम ठीक है यदि किसी भौतिकवादी व्यक्ति को किसी भक्त का संग मिल जाता है तो वो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और वो मयूर के समान नृत्य करता है। How does it look like to dance like peacocks?
कैसा लगता है मयूर के समान नृत्य करना? Can anyone show us how to dance like peacocks? क्या कोई दिखा सकता है कि मोर के समान कैसे नाचा जाता है? Prabhupada says, we have practical experience of this. Many of our students were dry and morose previous to their coming to Krishna consciousness, but having come into contact with devotees, they are now dancing like jubilant peacocks. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका हमको पूरा अनुभव है। पहले हम देखते थे कि कुछ भक्त जो बाहर थे तो दुखी रहते थे, लेकिन जब वो भक्तों के संग में आए तो एकदम प्रसन्न मयूर के समान नृत्य करते हैं। Yeah, we should dance in such a way just to get the attraction towards our dancing. तो हमको इस प्रकार से नृत्य करना चाहिए कि लोग हमारे नृत्य को देख करके आकर्षित हों। There is this one devotee, and he has a long hair, very long, very long. Huh? No long hair. Now no more long hair because I told him to cut his hair, and he would dance like a Bharatnatyam dancing, like this is, and we have to tell him, Prabhu, don't dance like this because everyone is just attention is to him. तो एक भक्त थे जिनके पहले बहुत बड़े बाल थे, वो ऐसे नृत्य करते थे जैसे कोई भरतनाट्यम के ऊपर नृत्य कर रहा है। तो उनको बताना पड़ा कि ऐसे नहीं नृत्य करना चाहिए, नहीं तो सभी आपको ही देख रहे हैं। See, regarding your dancing in the middle of the kirtan, it is not wrong, Prabhupada says. तो कीर्तन के बीच में नृत्य करना एकदम से गड़बड़ नहीं है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। It is completely right. If in your kirtan everyone dances in ecstasy, it is perfectly all right. That is spiritual enthusiasm. तो ये एकदम ठीक है। यदि आप कीर्तन में कोई बीच में खड़े होकर नृत्य करने लगे तो ये बहुत अच्छा है, ये आध्यात्मिक उत्साह है। Oh, yes, I'm going to the newly purchased church temple, and when I go there by Sunday next, I shall try to teach the local boys in the way of performing Sankirtan in a circle. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हाँ मैं नए मंदिर में जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी खरीदा गया है, और जब मैं उधर जाऊंगा तो वहाँ पे जो लड़के हैं उनको गोल में नृत्य करना कैसे करते हैं ये सिखाऊंगा। So that is bona fide. If it's in devotees, the kirtan leader and the midanga player, they're like in the middle, and then devotees, they will go dance around. Sometimes even two circles, one going this way and the other one going that way. तो ये स्वीकृत है, ये अच्छा है कि कई बार जो है कीर्तनिया और जो विधन बजाने वाले वो बीच में रहते हैं और उनके इर्द गिर्द चारों तरफ भक्त घूमते हैं, एक गोले में अथवा कभी कभी दो गोले में भी, जो कि विपरीत दिशा में घूमते हैं। This is about turning backs to deities while dancing and dancing to one another. Prabhupada conversation in Washington, D.C. Rupanuga's concern was about the way the devotees dance in the temple. He felt it was not proper, especially during Mangal Arti. Is it not that the devotees should not turn their back while dancing to the deity? तो नृत्य करते समय श्री विग्रह के सामने अपना पीठ दिखाना, इस विषय में प्रभुपाद जी से भक्त बोल रहे थे, रूपानुग प्रभु बोल रहे हैं कि किस प्रकार से भक्त लोग मंगल आरती में नृत्य कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। विशेष रूप से जब भगवान के दर्शन खुले हुए हैं और भक्त अपना पीठ दिखा करके उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? Prabhupada agreed with him, no, and that they should not bump each other or dance with each other personally. Distraction, the attention from the deity. Shouldn't all the dancing be focused toward the deity? प्रभुपाद जी उनसे सहमत थे कि नहीं, इस प्रकार से बिल्कुल नहीं करना चाहिए और एक दूसरे में कूद करके घुस नहीं जाना चाहिए। सारा का सारा जो ध्यान है वो केवल भगवान की ओर होना चाहिए। Have you seen devotees sometimes they will jump up and down and then try to bump each other? तो क्या आपने देखा है कि भक्त लोग कूद करके एक दूसरे से टकरा करके नृत्य करना चाहते हैं? देखा है आपने वो? This is a no. इसको नहीं करना चाहिए। Prabhupada says here. Prabhupada says, yeah, sometimes dancing is done here in a peculiar way.
He was smiling, but his point was serious. That is not desirable. The dancing Chaitanya Mahaprabhu is showing. तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि हाँ यहाँ पर मैं देखता हूँ कि विचित्र प्रकार से लोग नृत्य करते हैं, ये ठीक नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे वैसे ही नृत्य करना। So yes, you have shown us the changing of the feet with arms upraised, not with the back to the deity, Rupanuga said. तो हाँ, आपने बताया है कि किस प्रकार से नृत्य करना है कि दोनों हाथ ऊपर करके पैरों को बदलना, दाएं पैर बाएं और बाएं पैर दाएं की ओर, और अपना पीठ भगवान को नहीं दिखाना। They do it out of sentiment, Prabhupada said, but that is not very good. प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भावुकता के उद्गार है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। Also, they bump one another with a drum or with each other's bodies. That is not bona fide, is it? Rupanuga asked. ने पूछा कि कई बार वो तो एक दूसरे कूद करके एक दूसरे से टकरा कर नृत्य करना चाहते हैं, और कई बार जो है बदन को भी टकरा करके नृत्य करते हैं, तो क्या ये ठीक है? It is very popular in our movement now. This was 1976, like 50 years ago. 1976 में ये बहुत प्रसिद्ध था कि भक्त लोग कूद करके हवा में एक दूसरे से टकराते थे, तो ये क्या है ठीक है? प्रभुपाद से पूछे। They are inventing, Prabhupada said resignedly. What can I do if you invent your own way? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये तो अपने ही तरीके से ये लोग नृत्य कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं अगर आप अपने ही तरीके से नए तरीके से नृत्य करना चालू कर दें। Yes, this is very, very important. Although it is not offensive to dance in a circle before the deities, care should be taken not to keep one's back to them. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यद्यपि श्री विग्रह के सामने गोला बना करके नृत्य करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना पीठ भगवान को न दिखाएं। Especially while the arti ceremony is in progress, devotees' attention should be mainly to the deities. विशेष रूप से जब आरती हो रही है उस समय सभी भक्तों का ध्यान केवल श्री विग्रह पर होना चाहिए। I was thinking also, I noticed that, anyway, I should correct it because there is some devotees in the temple room whose back are always on the deities. तो कई बार मंदिर में देखा है मैंने कि कुछ भक्त हैं जो हमेशा भगवान को अपना पीठ ही दिखाते रहते हैं। I don't know if you notice it. The devotees who are selling boga bandar, now that I've heard this, now that I've read this, they have to be corrected also. Because they're back, they may be very far from the deities, because as soon as you enter the temple room, they'll be there. They have these small shelves with boga bandar, boga for offering, but their back is at the deity. So yeah, it has to be side. Now it's confirmed. Even you're not dancing. कई भक्त हैं जो मंदिर में भोग बेच रहे हैं, लेकिन उनका जो पीठ है वो भगवान से हो जाता है, इसको ठीक किया जाना चाहिए। So the best is, if we can, that Swami step, the two steps. तो बहुत अच्छा होगा यदि हम नृत्य में स्वामी स्टेप ही करें, जिसमें दो ही स्टेप होते हैं। Avoid collision during exuberant dance. अभी उन्मत्त होकर जब नृत्य करते हैं उस समय एक दूसरे से टकराने से बचना चाहिए। Yeah, you've seen that in young people. They like it. There's some group of followers of certain type of music. I'm sorry to say, but even our devotees, they're initiated, they're chanting, but then the type of music that they play will make the listeners to bump with each other.
And it's very difficult to understand their songs, even though they have message, spiritual message. But then when they say, they're like, I cannot understand what they're singing, but there's a group of people following this kind of music. It's in a mode of ignorance and passion. I'm sorry. Some of them are my friends in the Philippines. Hare Krishna. कुछ युवा वर्ग हैं जो आज इस प्रकार से कीर्तन कर रहे हैं, उसमें वो बोलते तो आध्यात्मिक चीज है, लेकिन ऐसे प्रकार से बोलते हैं कि उस समय जो नृत्य कर रहे हैं वो एक दूसरे से टकरा करके नृत्य करना चाहते हैं। ये तो रजोगुण तमोगुणी नृत्य है। They probably made a devotee or two, but most of them so rough. We should not dance like that. तो ये एक प्रकार जो दृढ़ता है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। Okay, it says in the Padma Purana, quoted in the Hari Bhakti Vilas, Hari Bhakti Sudodhaya, O king, when the devotees of Lord Krishna dance, their step crushed the inauspiciousness of the earth. Their glances destroy the inauspiciousness of the 10 directions. तो हरिभक्ति सूर्योदय में पद्म पुराण से उद्धृत किया गया है कि जब कोई भक्त नृत्य करते हैं तो उनके चरणों की ठोकर से पाताल के सब प्रकार के नष्ट हो जाते हैं, और वो जब दसों दिशाओं में अवलोकन करते हैं तो उनकी दृष्टि मात्र से सभी दिशाओं का अवलोकन नष्ट हो जाता है। So we should dance in the Kirtan. All the scenes of those who dance before the deity while playing kartals fly from their bodies like birds. तो जो भक्त भी कीर्तन में नृत्य करते हैं करताल जाकर के, तो उनके पाप उसी प्रकार से भाग जाते हैं जैसे ताली बजाने पे चिड़िया उड़ जाती है। Hari Bhakti Vilas. हरि भक्ति विलास में When the devotees are dancing, no one should remain sitting and watching, and no one should come between the Lord and the dancers. तो जब कोई भक्त नृत्य कर रहे हैं कीर्तन में, उस समय किसी को बैठे नहीं रहना चाहिए और भगवान और नर्तकों के बीच में भी नहीं आना चाहिए। So you notice some devotees are like this. There's a kirtan going on and they're just like कई बार कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि कीर्तन हो रहा है और वो आसन जमा करके बैठ जाते हैं। Hari Bhakti Vilas says, that person who remains sitting and watches the devotees dance will be born lame birth after birth. कि यदि कोई व्यक्ति उस समय बैठा रहता है जब भक्त लोग कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं, तो कई जन्मों तक लगा रहता है। It's like in the morning when I chant, like after the Guru Puja, so we will sing the Maha Mantra, but some devotees they just like look at us and say, like, I don't know what he's thinking. He may be thinking, I don't know. But then I will say, Bolo, instead of just looking, they should chant also. Bhakti Vikas Swami says, those who are unwilling, particularly guests and newcomers, or the sick and elderly, should not be forced. तो भक्ति विकास में बोलते हैं कि जो नए लोग हैं अथवा मेहमान हैं अथवा जो बूढ़े हैं बीमार हैं उनको जबरदस्ती नृत्य नहीं करवाना चाहिए। But they may be encouraged in a very polite way to join in. But we have one devotee here, Prabhuji. He's 93 years old. 90 what? 96 years old. And he's there every day for Mangalarti. And he would dance also during the kirtan. He goes like this. Yeah, when he really like get into ecstasy. 96 and a half. Okay.
Almost 100 years old. I hope every one of us will reach up to 100 so we can preach more and more. लगभग 100 साल के हैं प्रभु जी, हमको भी उम्मीद है कि सभी भक्त 100 साल तक जिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकें। Such an example, huh? Retired colonel. He is one of the soldiers in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. ये रिटायर्ड कर्नल हैं और अब ये चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन सेना में एक कर्नल हैं। And still with full energy, isn't it? पूरे उत्साह के साथ करते हैं। It's a good example. He will dance, he will be there, sing along with us during the kirtan. ये कीर्तन में बड़े साधन से करते हैं, गाते हैं। Okay, ISKCON dancing styles. So several styles, this is from His Holiness Bhaktivedanta Swami. Several styles of dancing, information have been evolved in ISKCON that although not traditional, are tasteful and not against the spirit of devotion. तो इस्कॉन डांसिंग स्टाइल भक्तिवेदांत प्रकाश स्वामी महाराज बोल रहे हैं कि कई नए प्रकार के नृत्य आ गए हैं जो कि हो सकता है कि पारंपरिक ना हो लेकिन फिर भी भक्ति के विरोधी नहीं है। Some of these are rows of devotees rhythmically approaching each other and then receding. It's like rows, they will go like this, yeah, facing with each other and then go back. I've seen this in Pune, and I think also here, temple room, right? Our new devotees, they will chant like this. तो उसमें एक तरीका है कि भक्तों की दो पंक्तियां होती हैं और वो एक बार साथ पास में आते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। Dancing round and round in a circle. This was personally introduced by Srila Prabhupada in Kirtan in the West. और एक तरीका है कि गोल गोला बना करके नृत्य करना, ये प्रभुपाद जी ने स्वयं पाश्चात्य देशों में प्रचलित किया था। Or rhythmically moving towards and away from the deities or Vyasa-san, going back and forth. You're doing this also, right? Srila Prabhupada liked this style, although he did not personally teach it. So this was the first time that they did it in Mayapur, first Mayapur festival in 1973. Or dancing in the middle of a circle of devotees. Prabhupada says that regarding your dancing in the middle of the kirtan, it is not wrong. It is completely right. The main thing is don't show your back to the deities. Devotees should move back and forth without turning around. And devotees should turn while moving in the circle away from the deities. Okay, this is the last one because I have to go for the Sunday Arti Kirtan. After this, we can have question and answer. Devotees should maintain reverence and avoid offenses while dancing, such as pointing the feet at the deity or keeping one's back to the deity. Dancing by raising high the knees or the whole legs is unauthorized. Have you seen this? You know, devotees will go
the knees going up and sometimes going high like this. घुटने उछाल करके नृत्य करते हैं, ठीक है। Speculative and indicative of uncultured upbringing. So yeah, this rap dance, like going, should not be done. तो ये जो विचित्र प्रकार से बेढंगा नाच है, ये अच्छी सभ्यता का परिचायक नहीं है। Raising the legs means pointing the feet towards the deities or devotees, which is offensive. अपना पैर उठा करके भगवान की ओर अथवा भक्तों की ओर दिखाना यह एक अपराध है। Also, the legs should not be bent at the knee so that the soles are visible from behind. और अपने पैरों को इस प्रकार से नहीं मोड़ना चाहिए कि पीछे से पैरों के तलवे दिखाई दें। Okay, I guess we stop here. तो अब यहाँ पे हम रुकेंगे। Any question or comment? There's so much more in dancing. किसी को कोई प्रश्न है या टिप्पणी है तो Any question? After the Kirtan, I have another class for the devotees from Hyderabad, Atarpur. Yeah, but in yeah, I've been there. The opening of the temple behind Radhidam. Yeah. Haribol, Sachi. Oh, where are you? Oh, you are there. Okay, the question is there. Right there. Hello. Hello. No hello, only Hare Krishna. Hare Krishna. Speak properly. Use the microphone. Go ahead. Can you hear him? Come on. You're a grown-up boy. कीर्तन करते समय हम उसका नृत्य करते हैं, नृत्य। लेकिन हम इतने समय तक खुद के लिए नृत्य कर रहे हैं, खुद के लिए नृत्य कर रहे हैं। आज मैंने देखा, मैंने भगवान के लिए नृत्य करने की चाहा, लेकिन वो संतोष मुझे मिल नहीं रहा है। इसमें मेरी त्रुटि कहाँ है? Last so many days we were dancing, but we were dancing for our own pleasure. But today, for some days, I am trying to dance for the pleasure of the Lord, but I am not getting that satisfaction. Yes, our main purpose in bhakti, it doesn't matter what we do, is to please Krishna. तो भक्ति में हमारा मुख्य प्रयोजन है भगवान की प्रसन्नता, हम चाहे कुछ भी करें। To please the devotees. भक्तों की प्रसन्नता। But somehow or other, we should not lose that in our mind, that intention, that purpose. ये भाव हमारे मन से अलग नहीं होना चाहिए। So always try to remind yourself not to get carried away. But when the Lord is pleased, you also become happy. So that's all right. But don't be, as we've heard, dance or chant in a way that it be only for our own sense enjoyment. तो इस भाव को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये बात अवश्य है कि जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इस चीज को भूलना नहीं चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही हम नृत्य कर रहे हैं। That is okay. As Prabhupada says, if you cry with the devotees can understand that you're crying because of your emotions. You cannot stop it because you are feeling grateful or you are thanking Krishna or you're feeling in love. So that's okay. We can understand. But don't do it in such a way that if you're out there, let's say, in the Harinam Kirtan, some Kirtan outside, try to suppress your feelings in such a way that
the general people will misunderstand your feelings. तो अपने भावों को अभिव्यक्त करना कोई गड़बड़ नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे कि यदि हम भक्तों के सामने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कुछ रो भी देते हैं भगवान के सामने, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अपने हृदय को हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें खुले में बाहर में नहीं होनी चाहिए। Do you understand? Yes? It's okay, but don't get carried away too much that you lost your sense of where you are. तो ये ठीक है, उत्साह नृत्य में, लेकिन कभी ये मत भूल जाइए कि आप कहाँ पे हैं। Something like that. Anything, any other points or question? Yes, Prabhu. हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने लगातार अभी आपकी क्लास सुना और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और हम सब प्रयास करेंगे कुछ सुधार करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन कल की क्लास से है कि हमें बहुत से भक्त पूछते हैं कि क्या हम मंगला आरती 4:30 बजे के बाद 5-6 बजे तक कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या जवाब? हरे कृष्ण। Narad, thank you for your lectures. I am regularly attending your lectures since the last 4 days. I am feeling very inspired to change many things in my life. And I have a question from yesterday's class. Like many devotees asked from me that if I do Mangal Aarti at 5 instead of 4:30, then is it fine? Yes, yes. Grihastas, you have a little license to be late. तो ये ठीक है, अगर कोई घर में है तो थोड़ा देर से भी कर सकते हैं। But you have to be consistent. If you do 5 o'clock, do it 5 o'clock. इसमें भी नियम रखना चाहिए, यदि आप 5 बजे कर रहे हैं तो फिर 5 बजे करना। During my travels, sometimes because there is no place at the temple to stay, I stayed with my god sisters or god brothers, but they have very strict pakka every day Mangalarti, and they don't miss it. 5 o'clock, 5 o'clock, 4:30, 4:30. Yes, there is no hard and fast rules for the grihastas. You don't have the same kind of like strict standard. It's like what we have here or at the temple, but you have to be always prompt or be there on time. That the next day, or if you're not feeling well, then that is an excuse. But don't do it like go up and down, up and down. It should be like this, consistent. तो कई बार जो है जब मैं प्रयोजन करता हूँ प्रचार के लिए, तो ऐसी जगह पे पहुँचता हूँ जहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, तो मुझे अपने गुरु भाई गुरु बहन के घर में रुकना पड़ता है। तो उस समय मैं देखता हूँ कि वो लोग अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, जो भी समय रखते हैं उसी को करते हैं। 5 बजे तो 5 बजे, 4:30 बजे तो 4:30 बजे। कभी कभार हो सकता है कि आप बीमार हो तो उसकी बात है, लेकिन सामान्यतः नियम से एक समय तय कर लेना। Okay. Any other question? हरे कृष्ण महाराज। Oh, yes. After that, go this way. Okay. हरे कृष्ण महाराज, मेरे मेरी 2 जिज्ञासा है। पहली जिज्ञासा ये है कि हमने बचपन से ही कृष्ण भगवान को फ्लूट बजाते हुए देखा है, बांसुरी बजाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर या फिर कहीं भी इस्कॉन में वाद्य यंत्रों में फ्लूट नहीं रखा गया है, और ऐसा क्यों? और दूसरा प्रश्न ये है कि राधा कृष्ण एक साथ डांस करते थे, तो क्या मंदिर के अंदर कोई भी कपल एक साथ डांस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये 2 प्रश्न हैं। धन्यवाद। I have 2 questions. My first question is that I have seen flute being played in the kirtans. What? Flute. Flute? But here, I'm sorry. We see that Krishna is playing flute. Krishna plays flute. Yeah. But here in ISKCON we never see that flute is being played in the kirtans. This is my first question. No, flute is mainly, especially for bhajans, sitting down. तो
जो बांसुरी है, फ्लूट है, वो भजन के लिए है विशेष रूप से. And second question is, Maharaj, we see that Radha and Krishna, they dance together. So is there some provision that couples can also dance together in temple? Hare Krishna, Prabhuji. You want to be a grihastha? No, Vedic culture is always separate. Man to man, ladies to ladies. In America, especially when Prabhupada saw that the intermingling of the boys and girls is very difficult for him to break. So before he will initiate them, they have to be married. So no, that is not Vedic culture. Vedic culture, no. If it's Bollywood, no problem. Men and ladies together, but no. No. Even Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he would initiate his disciples, female disciples, and there's a curtain in between the disciple, the female disciple, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So we're not that strict as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. So there should not be intermingling. No. ये वैदिक सभ्यता नहीं है. पुरुष लोग अलग नृत्य करें और माताएं अलग नृत्य करें. गोपाल जी जब पाश्चात्य देश में शुरुआत में दीक्षा देना उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लड़के लड़की आपस में बहुत मिलते थे. तो पहले दीक्षा देने से पहले उन्होंने उनका विवाह कराया. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब दीक्षा देते थे, तो वो अपनी स्त्री डिसाइपल्स के बीच में एक पर्दा लगा देते थे. तो ये वैदिक सभ्यता नहीं है. बॉलीवुड है तो ठीक है, वहाँ पर साथ में नृत्य कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते. A strict brahmachari should not see the opposite sex dancing or sleeping. जो एक कट्टर ब्रह्मचारी है, वो विपरीत लिंग को नृत्य करते हुए नहीं देखना चाहिए. Even Lord Chaitanya Mahaprabhu, just even to see a wooden doll, yes, he will not want to see. चैतन्य महाप्रभु की स्थिति थी कि वे लकड़ी की बनी हुई लड़की को भी नहीं देखते थे. But this is very extreme. How can we avoid not seeing the woman? We should see everyone though as spirit souls. The woman should see the man as spirit souls, and the man should see the woman, the opposite sex, as spirit souls. But that is very difficult because we're so much in the bodily concept. So it should be separate. तो ये जो है इसको रोकना, विपरीत लिंग को देखना थोड़ा कठिन रहता है. वास्तविकता में जो स्टैंडर्ड है वो यह होना चाहिए कि पुरुष सभी स्त्री को जो है आत्मा के रूप, आत्म स्वरूप में देखे, और स्त्री सभी पुरुष को आत्म स्वरूप में देखे. लेकिन ये बहुत कठिन है आजकल के समय में. Any questions here? Please give the mic. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Please accept my sincere obeisances in a lotus feet. Thank you for the lecture. We came to know do's and don'ts that we need to do because we are doing. There is a reason, so we got to know that reason. My question, Maharaj, when especially in Darshanarti, that's my experience when in Darshanarti, when this song plays that Govinda Mahari Purusham. So it's kind of, I mean, something, I don't know what is that energy, tears flows without no reason. I don't require anything from the Lord. But the tears flows and I cannot stop it. So is that a good and all? Yes, sure. That is. तो कई बार जो है कीर्तन करते समय जब उसमें गोविंदारी पुरुषम गाते हैं, तो दर्शनार्थी के समय तो उसमें आंसू बहते हैं बिना किसी कारण के. उसको रोकना कठिन हो जाता है. तो उस विषय में क्या करना चाहिए? When the practitioner of bhakti becomes more and more advanced, then it says that the heart starts to melt.
तो जब कोई भक्ति में बहुत अग्रसर हो जाता है उस समय हृदय पिघलने लगता है। That means his heart becomes more and more pure. इसका अर्थ है उसका हृदय और And therefore, the loving sentiment towards the Supreme Lord becomes to manifest. और उस समय भगवान के प्रति प्रेम भाव प्रकट होने लगता है। And anything that has in relation with the Supreme Lord, you become affected. You remember Krishna. और जब भी कभी भगवत विषय कोई भी सामग्री सामने आती है तो भक्त उससे प्रभावित हो जाता है। And that's why Srila Prabhupada, when he first heard this Govindan song, even though it was sang by Yamuna Mataji, but it was done in a pure way, that Prabhupada, he said that all the temples in ISKCON should play this song during the Darshan Arti. यही कारण है कि जब प्रभुपाद जी ने पहली बार यमुना देवी दास जी के द्वारा ये गीत गाया हुआ सुना तो उसी समय प्रभुपाद जी ने प्रावधान बनाया कि इस्कॉन के सभी मंदिरों में दर्शन आरती के समय यह गाना चाहिए क्योंकि इसकी भावना बहुत शुद्ध तरीके से गाया गया। So it doesn't matter who sang it, but it was done perfectly, glorifying Govinda. So Srila Prabhupada, he was crying also, tears coming out from his eyes. किसी ने भी गाया हो इससे विशेष मतलब नहीं है लेकिन जिसने भी गाया है बहुत ही शुद्ध चित्त से इसको गाया था तो प्रभुपाद जी भी जब इसको सुने तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। I wish I had the same feelings like yours, that when I hear the Govindan song, that tears will flow. तो मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि ये भाव मेरे अंदर प्रकट हो पाए जब मैं गोविंद प्रार्थना सुनूं। Okay? Any other points? Yes? Where is the mic? Right here, right there. Last one, okay? Yes? Uh-huh. Don't turn it off. Okay. Hare Krishna Maharaj Ji, Dandavat Pranam. Firstly, thank you so much for your guidance. It has helped clear a lot of things. I'm a very amateur devotee, so I wasn't sure about the difference between bhajan and kirtan, and whether or not we can use harmonium while doing kirtan in a temple hall. Mm-mm. Thank you. Yeah, it's a comment. This is commenting that महाराज के टिप्पणी दे रही है कि महाराज बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कथा के लिए। मुझे पता नहीं था कि कीर्तन और भजन में क्या अंतर होता है और मंदिर प्रांगण में जब कीर्तन हो रहा है उसमें हारमोनियम का प्रयोग किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना। Srila Prabhupada ki Itai Gaur Sitanath Premanande Hari Hari Bol. Now we're going for Gaur Artik. And then His Holiness Lokanath Swami will be leading the Damodarastakam prayers.